My name is Saksham Ajmani and I have applied in the University of New Brunswick, and I am really excited for the Canada Education Fair, which is on 20th of August 2022 from 11 am to 3 pm. Meet the top university representatives and clear all the doubts about your desired courses. Is your concern related to Canada visa refusal? Are you worried about reapplying? Welcome to Inspire Overseas, guys. Today we are going to cover the aspects of why there's a surge in Canada visa refusal. And we have our study abroad expert, Mr. Upendra Vasudev. Sir, what should we do now? Guys, thank you for having me, Shrishti. Of course, there's a surge in numbers of visa refusal. And so सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि what is the reason behind it? देखिए, the talk in the industry is कि the reason is that कनाडा के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ कोविड बड़े सारे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारा काम पाइल अप हो गया। तो इनके पास एक सिस्टम हुआ करता था चिनूक। चिनूक इज अ चिनूक और शिनूक अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इट्स एन एक्सेल बेस्ड टूल जो बेसिकली बल्क प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अब अगर एक वीजा ऑफिसर जो दिन में 5 एप्लीकेशंस 6 एप्लीकेशंस को देखता था, अगर उस वीजा ऑफिसर को बोला जाए भैया 100 एप्लीकेशंस को देखो, तो उसे कोई टूल तो लगाना है, उसके बिना वो कर नहीं सकता। सो इस समय बिकॉज कनाडा वाज ओवरवेल्म्ड विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, दे बिगन टू यूज दिस। So major reason why immigration has been using this tool is because of the bulk. Absolutely. और ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे यूज होता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे यूज होता है। जब जब इमिग्रेशन को लगता है कि भाई दे आर ओवरवेल्म्ड विद द नंबर्स, नहीं हैंडल होंगे, तो वो क्या करें? So this is like a protocol कि जब भी एक्सेस में आता है bulk they use it, या असल में प्रोटोकॉल का तो ये है कि देयर आर मेजर कंसर्न्स अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट या फेयरनेस ऑफ इट। कोई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल फेयर तो हो नहीं सकता। तो इट्स असूलन तो ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता ही होता है, लेकिन कभी भी इमिग्रेशन खुल के मानती नहीं है कैसा हो रहा है, पर इंटरनल इमिग्रेशन से पता लगता है डेफिनेटली यूज। एंड इसके क्या मेजर फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट व्हाई देयर इज अ रिफ्यूजल? देखो, मेजर फैक्टर सबसे पहले तो बात है कि फैक्टर तो एक ही है कि उनके ज्यादा एप्लीकेशन है। दूसरा फैक्टर ये इतने ज्यादा लोगों को वीजा दे नहीं सकते हैं, तो ये अपने साल की कैबिन बना लेते हैं, वीजा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वी नीड, और बाकी तो रिफ्यूज कर दें। पर अब इनके साथ प्रॉब्लम है, ये फेयर कैसे रहना अपनी तरह से वो फेयर चाहते हैं, तो इस समय वो क्या करें? अच्छा आइल्स कम है, पहले फिर भी होता था एक सेक्शन में 5.5 है, उसको कम से कम नजर तो दे दी जाती थी, कुछ को मिल जाता था, कुछ को नहीं मिलता था। इस समय तो ऐसा हो गया कि बिकॉज ये बल्क प्रोसेसिंग टूल ही उसको फिल्टर आउट कर देता है, तो वीजा ऑफिसर उस फाइल को खोल के देखता ही नहीं। तो नॉर्मली जो वीजाज आ रहे हैं वो 2-2 3-3 महीने में आ रहे हैं, और जो चिनूक से रिफ्यूज होके आ रहे हैं वो 15 महीने के अंदर ही रिफ्यूज हो रहा है। So that's it. So what should the students do now in case of that? You don't have a choice but reapply, and why not? देखिए, like I was telling you, हमेशा यूज नहीं होता। ये जब इमिग्रेशन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होती है विद द नंबर्स तब करती है। दूसरा, ये एक सीक्रेट टूल है, मतलब सीक्रेट इन द सेंस ओपन सीक्रेट है, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर आता है कि इसको यूज नहीं करना, तभी हटा भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। आई बिलीव इस समय काफी प्रेशर आ रहा है इनको हर जगह से, क्योंकि बड़े अटपटे इलॉजिकल से रिफ्यूजल्स आए हैं, और वो आएंगे जब एक टूल करेगा तो कुछ तो इलॉजिकल भी फंसेंगे। सो आई बिलीव अब टाइम बेटर है अप्लाई करने का, एज अगेंस्ट नवंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर द वर्स्ट, अक्टूबर टू जनवरी वाज द वर्स्ट टाइम। ओके, इस टाइम पे सबसे ज्यादा ऐसे रिफ्यूजल्स आए थे। आई बिलीव नाउ टाइम इज बेटर, द होल इमिग्रेशन टीम इज नाउ वर्किंग इन पर्सन, so we are expecting better results now. तो जब हम रीअप्लाई करते हैं तो what are the things that one should keep in mind कि फिर से रिफ्यूजल ना हो, या फिर so देखिए, नॉर्मली तो आपको ध्यान रखना है IELTS is one of the biggest reasons for refusal. दूसरा रीजन आया था आपके एकेडमिक स्कोर्स, आपके गैप्स, हैव यू एक्सप्लेन्ड द गैप्स वेल, कितनी एप्लीकेशंस मेरे पास रिफ्यूजल के बाद वाली हैं, बस ये कोविड डिले लिख दिया, ये कोई मतलब नहीं होता। आपको उसको यू हैव टू वेल डॉक्यूमेंटेड, कवर इट वेल, ठीक है। प्रोग्रेशन आपको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है, कौन सा कोर्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो,
ये कोर्स से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड. अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो उसको, आई हैव सीन केसेस जिनके पास अच्छे खासे फाइनेंसेस थे बट फिर भी उन्होंने नहीं लगाए बिकॉज दे थॉट देयर इज नो नीड. ऑफ कोर्स एसडीएस के अंदर मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू हैव गुड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इट्स गुड टाइम टू इंक्लूड देम, स्पेशली आईटीआर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंट है तो क्यों नहीं लगा. Of course, if you don't have it, you don't have a choice, and you still have a reasonable chance without that too. But that's something you should, cover well. Okay. तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो चूज करना चाहिए, सर्टन कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि इस प्रोग्राम में जाएंगे तो वीजा रिफ्यूजल नहीं आएगा और इसमें जाएंगे तो वीजा रिफ्यूजल आ जाएगा. देखिए, ऐसा प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं है, बट एक वीजा ऑफिसर प्रोग्रेशन को यूं अंडरस्टैंड करता है. आप एप्लीकेशन में हमेशा लिखते हैं कि मैं कोर्स करने जा रहा हूँ एंड इवेंचुअली आई वांट टू रिटर्न बैक टू इंडिया, राइट. आप ये तो कभी भी नहीं लिखते हैं, आप कभी ये तो नहीं लिखते हैं कि मैं आपकी कंट्री में इमिग्रेशन के लिए आ रहा हूँ. नहीं. जब आप ये लिख रहे हैं कि मैं आपकी कंट्री में एक कोर्स पढ़ने आ रहा हूँ एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स आई विश टू रिटर्न बैक टू इंडिया एंड ये कोर्स मेरे करियर के लिए अच्छा है, तो करियर तो आप एक्सप्लेन करोगे कैसे. सपोज करिए मैंने पहले बीबीए किया हुआ है, अब मैं कोई उल्टा सीधा कोर्स निकाल दिया मैंने लॉ का, तो डजंट मेक सेंस. सो प्रोग्रेशन शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड. मेरी पास्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलोगे. अब आजकल फॉर एग्जांपल आईटी के प्रोग्राम्स का वीजा सक्सेस रेट बेटर है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई भी आईटी का कोर्स कर लेगा, राइट. सो इट शुड मैच विद योर प्रीवियस प्रोफाइल, नंबर 1. नंबर 2, you have to show following completion of this program how is it going to improve your job prospects back in India. So if you document that well, it should do the job. So this, we should connect the dots. One is this. Absolutely. Then comes the query that when you refile, there's a statement of purpose that should be strong enough. Absolutely. In fact, I would say, especially in refiling, statement of purpose or cover letter for that fact becomes the single most important thing. बाकी documents तो basic हैं, वो तो रखोगे ही आप. But statement of purpose becomes very very important. Of course, मैं in a way contradict कर रहा हूँ कि अगर चिनूक लग रहा है तो आपकी statement of purpose कौन पढ़ रहा है. But जब फाइल खुलेगी, तब statement of purpose becomes the most important piece of paper. जिसमें आप अपनी इंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि मैंने एक कोर्स क्यों चुना. देखिए, एसओपी फर्दर उस बात को डीपन करेगा, बट अदरवाइज आल्सो इट शुड मेक सेंस. अब ये नहीं है कि मैंने पहले बीबीए किया हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ मान लो लॉ के लिए और अब मैं जितनी मर्जी अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लूं, इट विल नॉट मेक सेंस. सो पहले तो आपका कोर्स चॉइस सब कुछ ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड मेक सेंस, बट फर्दर डीपन इट करने के लिए so broad perspective should be there, and then going to the depth we should have the SOP very clear. Absolutely. Okay. So I think that's about it, guys, and we have all the questions and all the queries cleared. In case of anything, any refiling, please do not hesitate to contact us. Thank you, sir. Bye bye. So Bye. Bye. Hi, my name is Jis Karan. I'm taking my classes from Inspired Overseas and I'm really excited for Canada Education Fair, which is on the 20th of August from 11 a.m. to 3 p.m. Get a chance to meet all top representatives of universities and get a chance to clear your doubts and enroll in your favorite design courses. Inspired Overseas, welcome you back. Today we have a very hot topic to discuss, which is whether we should go to UK or Canada from a student's perspective. So sir, what do you think? See, it all really depends which perspective we are looking from, and it's very easy to get stereotype. I get a lot of students जो कहते हैं जी UK तो expensive है. It's a myth because it completely depends हम किस perspective से देख रहे हैं. So first of all, to lay down the foundation of it, we all have to understand that UK and Canada follow completely different education systems. Okay. तो सबसे पहला एक इंडियन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वी गेट आर आइदर गोइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज. सो यूके का एजुकेशन सिस्टम इज 10 + 2 + 3 + 1. 10th 12th 3 साल की बैचलर्स डिग्री होती है और 1 ईयर की मास्टर्स डिग्री होती है. कनाडा में इट इज 4 years का बैचलर्स डिग्री एंड 2 years का मास्टर्स डिग्री. नाउ दिस क्रिएट्स द होल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज.
हमारे पास अगर एक टिपिकली स्टूडेंट 3 ईयर डिग्री वाला आ रहा है, उसको कनाडा में जो चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है टू यूके, क्योंकि यूके 3 ईयर की डिग्रीज को एक्सेप्ट करता है। उसको बड़ी आसानी से सिर्फ 1 साल की मास्टर डिग्री मिल जाएगी, जो कि उसको कनाडा में पहले तो मिलना मुश्किल है 3 ईयर की डिग्री के बाद कोई मास्टर्स प्रोग्राम, और अगर वो मिलेगा भी तो 2 ईयर्स का तो मिनिमम होगा। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को ऐसे केस में देखेंगे तो यूके सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि यूके में मास्टर सिर्फ 1 साल की है। सो दिस क्रिएट्स द होल डिफरेंस। नाउ उसके बाद ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्लिशे है कि जी यूके इज मोर एक्सपेंसिव एज एन लिविंग कॉस्ट। डिपेंड करता है, अगर आप सेंट्रल लंदन को कंपेयर कर रहे हो मे बी कनाडा की टिपिकल सिटी से, तो यस लंदन इज मोर एक्सपेंसिव, बट नॉट द एंटायर यूके। सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि आप कहां रहने वाले हो। तीसरा सबसे बड़ा फर्क जो आ जाता है वो पीआर के टर्म्स में आ जाता है। परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑफ Canada and UK are completely different. Canada has one of the most vibrant permanent residency programs. जिसमें you study for 2 years, you get a 3-year post-study work permit. Now Canada allows this post-study work permit on a diploma also and on degrees also, regardless. Whereas UK is very particular, it has to be a bachelor's or a master's degree. Diplomas पे Canada पे UK कोई post-study work permit नहीं देता। और UK के अंदर PR is a lengthy procedure. You have to work for at least 5 years to be eligible for PR. So आपके पास 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, इसके बाद आपको टियर 2 स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा। That's your only route to getting PR, and you'll have to continuously work for at least 5 years to be eligible for PR. Whereas in Canada, of course there are technicalities there too, but you can be eligible for PR within 1 year of your job, as long as it's a skilled job. So PR point of view से Canada generally has an advantage. UK also has a permanent residency program, but it's way lengthier. And if you talk about quality of education from a student's perspective? See, yes, UK has 160 odd universities. Canada has 1/4 of those. So yes, UK has traditionally been a hub of education, which Canada is not such a big hub. So Canada has some very fantastic names in international education. But yes, if I'm talking in terms of postgraduate, UK has far more options, because UK doesn't have this problem of seats for postgraduate students. Postgraduate mein Canada hardly has very limited quotas. Top universities have 2-3-4% quotas for international students because they are struggling to उनकी अपनी capacity बहुत ज़्यादा है। UK doesn't have any problem like that. Point number 1. Point number 2, इंडिया से एंट्री क्राइटेरिया मैच होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 ईयर डिग्रीज पहली मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज कंसिडर नहीं करती। फिर सीट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम। फिर यूके की जो एंट्री क्राइटेरियाज है वो फार मोर लीनियंट है एज फार एज करिकुलम इज कंसर्न। आप एक इंडियन करिकुलम में बीकॉम वाले स्टूडेंट को, बीबीए वाले स्टूडेंट को, बीए वाले स्टूडेंट को भी बड़े सारे प्रोग्राम्स में आसानी से अकोमोडेट कर सकते हो, जो कनाडा में इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रगल बिकॉज व्हाट वी फॉलो इन इंडिया इज क्लोजर टू द ब्रिटिश करिकुलम. It's not closer to the American curriculum which is followed in. And the cost is, as you said, it's not that expensive, it's barely the same. So, see, UK generally, typically speaking, देखो हम ना कितनी बारी करते क्या है कि कनाडा के कॉलेज को यूके के यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो दैट कंपैरिजन इज नॉट फेयर. कॉलेज ऑफ कोर्स चीपर होगा बिकॉज दोज आर वोकेशनल प्रोग्राम्स, दोज आर ट्रेड प्रोग्राम्स. उनकी फीस टिपिकली $15,000-16,000 होती है. उसको एक यूके की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना इज नॉट फेयर. इफ वी आर कंपेयरिंग देन वी शुड कंपेयर अ कनाडा का यूनिवर्सिटी विद अ यूके का यूनिवर्सिटी, जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. करीब 10-20% का डिफरेंस जरूर होगा, पर वो डिफरेंस कंपनसेट यूके में ऐसे हो जाता है कि वहां पे प्रोग्राम्स शॉर्टर है. इधर 4 साल की डिग्री तो इधर 3 साल की डिग्री. तो एनुअल कॉस्ट देखोगे तो वो यूके की 10-20-30% हायर है, पर वो उतना ही प्रोग्राम फास्टर है. मास्टर्स में देख लीजिए, यूके की 1 साल की मास्टर्स टिपिकल 15 से 20 लाख फीस है, बट वो 1 ही साल की है ना. कनाडा में चाहे वो फीस 12-15 लाख है, बट वो 2 साल की है ना. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर हम देखते हैं तो वो काफी केसेस में उल्टा यूके चीपर पड़ जाता है. And what about exposure in terms of somebody says, what about their career, their jobs? So there is no doubt UK attracts more nationalities. So typically, if I am studying in a, let's suppose,
a medium university in Canada, let's suppose Windsor, or let's suppose we are studying at maybe University of Prince Edward Island or Cape Breton, and UK की भी एक average medium ranked university ले लेते हैं like Brunel, Leicester, Lancaster. The proportion of international students will be way higher in UK because UK attracts more nationalities. Canada में आपको उतना बड़ा international mix मिलने के chances कम है. So अगर quality of education से हमारा international community से मतलब है तो वो UK में ज़्यादा है. Curriculum की बात करें तो वो दोनों में बहुत दम है. दोनों यूनिवर्सिटीज़ अपनी थोड़ा सा वो अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से डिज़ाइंड है करिकुलम और अपनी जॉब फोर्स के हिसाब से है. सो अगेन यहाँ पर बात की आ जाती है अगर पढ़ के आपने वापस आना है तो येस यूके सीम्स टू बी अ बेटर आइडिया, बट अगर आपने उसी कंट्री में एब्जॉर्ब होना है तो यूके की डिग्री के साथ आपको कनाडा में जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली और कनाडा की डिग्री के साथ आपको यूके में जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली. सो देन इट शुड बी अगेन द होल प्लान कि मेरा व्हाट इज माई प्लान आफ्टर एजुकेशन. So, last not the least, how will you clear this myth? Which one to choose? UK See, or Canada? this is ये फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है. देखो हर एक का केस बड़ा डिफरेंट है. आई बिलीव सबसे पहले एक स्टूडेंट को अपने मन में पूछना पड़ेगा मेरा पढ़ने का रीजन क्या है. अगर बॉटम लाइन पीआर है तो मोस्ट स्टूडेंट्स कनाडा ही चुनेंगे यूके के आगे. पर कई बारी इट फॉर मेनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग ऑन द होल कोर्स, ऑन द होल करियर. अब किसी की 3 ईयर डिग्री है, इन सच अ केस इट यूके कैन मेक गुड सेंस कि एटलीस्ट यू विल नॉट हैव टू सैक्रिफाइस ऑन योर कोर्स चॉइस. ऑफ कोर्स वहाँ पे कोर्स चॉइस आपको अच्छी मिल जाएगी लेकिन पीआर थोड़ी चैलेंजिंग है. यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि यूके पीआर नहीं दे रहा, बट इट्स मोर चैलेंजिंग. देयर आर मोर टेक्निकलिटीज टू बी मेट देन इन कनाडा. So it's going to be case to case basis. Undergraduate students जिसको PR फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कनाडा आसानी से चुन पाएगा, उसको चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज भी अच्छी मिल जाती है. बट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूके बिकम्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव. एंड PhD तो भूल ही जाओ, कनाडा में मिलना वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो यूके में फार मोर इजी है. Hi, my name is Sayed. I am taking my IELTS classes from Inspired Overseas, and I am really excited for the Canada Education Fair, which is taking place on the 20th of August from 11 a.m. to 3 p.m. Meet all top university representatives and clear your doubts and enroll in your desired courses in the top universities of Canada. Thank you. All right, Dave, you're on camera. Oh, hello. So where are we going, Dave? Well, we are going to Cypress Hills Provincial Park. So Cypress Hills is where Cypress County gets named from, which is the name of where Cypress College comes from. Awesome. So it's a glacier national park. It's a high elevation. So except for the Rocky Mountains, this is the highest point in Alberta in this country. It is a beautiful ride. Snow is beginning to form up. Yeah, this is the end of November. Yeah. In summer, this is all really green and lush. So you'll see mixed farmlands. So that was like a wheat field, and now you'll see wherever these hills and dips are, mostly ranches for cattle. Yeah. So we have snow just about till May, and it starts again in September, even though winter seems to come way later than it used to. So it used to be around Halloween in October, my school rink would flood an ice skating rink, and we would skate, October, November, December, January, February at the school skating rink, just on the school rink. But now we can't freeze outside until January. Okay. We don't have skating rinks until the very coldest part of the year in Western Canada. But if you go through the neighborhoods in Medicine Hat, you'll find hockey rinks all over town that we used to flood that we don't anymore.
They were just outdoor rinks. Are we around midway? Or is it far? No, it's very close. So that hills, huh? that tree line is where your skiing is. Interprovincial Park. Uh-huh. As we come into the valley, you see that this is a high altitude lake, which looks like a pile of snow because it's frozen. Yeah. And it goes all the way around, curves around the hill. It's like you can boat in here. It's all frozen already. Yeah, not solid enough to walk on safely or anything. Of but course. Yeah, it does stay frozen. It's mostly frozen? Yep. It's pretty cold even in the summer. So, so in the winter, it's especially cold. Yeah. You're in camera, Dave. Say hi. Hello. So this is Elkwater, right? It's Elkwater, yeah, and there's a few lakes. This is Elkwater Lake, which is why we have that name, but we also have Reeser Lake further up the hill. And if we don't turn off into the campground, we go right to the U.S. border. But these So are how the- far is the US border from here? About 30 more kilometers that way. That's it. Yeah. And here we go. So these hills have skiing in the winter, because you wonder why, when it gets cold, why would anyone come out here? Why is there a hotel and stuff? But winter sports are leisure activities too. So this lake goes quite a show. You want to record now the lakes? Yeah. This is getting prettier. This is getting prettier. Yeah, so in the summertime, this is the public beach, and we do water skiing here. Wow. And Canadian teenagers, you know, if you're from the prairies, you know, one of the first independent things you do is you come camping out here with your friends, right? So Outdoor? Lots of outdoor camping, yeah. Ooh, I already feel cold. So you, Well, in the you spring carry and some summer. heaters? Well, yeah, so in the, like for ice fishing and stuff, we would have heaters if we want to come fishing for that. And in the summertime, it's pretty warm, like, you know, by Yeah. this camping season is more May to October, May to September, I'd say. I believe. Wow, this is pretty. It's nice, yeah. And this is November. It's Yeah. not yet. It's not winter. It's not winter yet. No, it can get more wintry than this. Yeah, this That's place true. must get completely white in winters, right? Oh, sure, yeah. And for this temperature, this time of year, it could have been if it had had more moisture. But from the highway, the lake looks like a little pond, but it goes quite a ways. All right. There we go. So this is Elkwater Lake, and Elkwater Lake is in the Cypress Hills Provincial Park. So these hills are where the Cypress College gets its name from. You can see there's great elevation if we drive up the hills. Yeah. Almost like mountains, but this isn't the Canadian mountain, the Rocky Mountains. But it does feel like that. It looks like a Banff or Canmore. And Canadians like to do leisure activities up into the mountains and the natural parts of Canada. So in the summertime, we go fishing. They didn't leave enough forest for me. Yeah. But these smaller, but this is why people visit, even Canadians visit the Cypress Hills and the Rocky Mountains, because this is where our getaways are. So most of these houses are actually cottages owned by people who live in Medicine Hat, Yeah. and they vacation into Elkwater. So slide in here and see about gas. So now I'll look out of place wearing shorts now. Hands on it, okay. In shorts. My God. That's what it's like if I drive to Jasper, I'll get in the car in Medicine Hat and it'll be 30 degrees and I'll be just wearing a t-shirt shirt. Yeah. And then when I get to Jasper, I'll be like, ah.
Hi, my name is Parth. I'm taking my IELTS classes from Inspired Overseas, and I'm very excited for the Canada Education Fair, which is taking place on 20th August from 11 a.m. to 3 p.m. and meet all top universities representatives to clear up your doubts and get admission in top universities of Canada. Hello everyone, I'm Annie. I just started preparing for my IELTS when my mother, who is working at Inspired Overseas, introduced me to Mike sir. My decision of coming to him was the best decision, I think, because his guidance and tips and tricks actually helped me in scoring a really good band score. I scored an overall of 7.5 and 8.5 in reading. I really want to thank the whole team of Inspired Overseas for the immense support. And I would really recommend, if you want to study for IELTS, please do come here. Thank you. Hi everyone, I am Manmeet and I am pursuing my IELTS from Inspired Overseas, and I am very excited for the Canada Education Fair. The event is on 20th August from 11 a.m. to 3 p.m. You will get chance to meet all top universities representatives so that you can clear your doubts and get enrolled yourself in your desired courses. Thank you. Very good. Perfect.